तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख लो कि हमें प्रूफ क्या करना है, इस डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम इसमें प्रूव कर देंगे कि AC जो है वो आपको ABCD पैरेललोग्राम को इक्वली टू पार्ट्स में, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, वेयर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC। और अगर ये हो जाएगा तो सिमिलरली ये अपोजिट साइड वाला BD डायगोनल भी सिमिलरली हो जाएगा, वो भी डिवाइड कर देगा ABD को और BCD को। ओके, टेक दिस वन, this angle and this angle in triangle ABC and triangle ADC, angle BAC is equal to angle DCA, alternate interior angle. Now the next one, ये हो गया alternate interior angle। ये ले लो फिर, this one and this one, angle BCA is equal to angle DAC, same reason, alternate interior angles। AC is equal to AC common, so therefore triangle ABC congruent triangle ADC, which implies that diagonals divides the parallelogram into two congruent triangles, hence proved। Similarly, first write similarly BD, not BD, triangle ABD will be congruent to triangle this one BDC, hence prove that each diagonals divides the parallelogram into two congruent triangles। Is it clear? Yes, sir. ठीक है, okay। शिखा, is it clear? Yes, sir. Sir, by AS criteria. Sorry. Yes, I have not mentioned the criteria. Angle, side angle by angle, side angle. Okay. Yes, sir. Now the second theorem of this very portion is you have to prove opposite sides are equal. To prove opposite sides of a parallelogram are equal, opposite sides equal होता है। तो भाई since triangle ABC is congruent to triangle ADC, triangle ABC ADC, and this one ABD triangle ABD congruent to triangle BDC, both by angle side angle as explained above. So therefore in this very case ABC और ADC जब हम लेते हैं इस वाले में आपको इनफैक्ट एक ही में हो जाएगा, इसी केस में हम लोग AB will be equal to CD and BC will be equal to AD।
by CPCT, corresponding part of congruent triangles. Is it clear? Any confusion, any of you? नो सर। Okay. सर यही दो प्रूफ किया हुआ है, इसके अलावा कन्वर्स है। Yes. इसके अलावा कन्वर्स दिया हुआ है सिर्फ। बिल्कुल इसके अलावा कन्वर्स होगा. In this one we have to prove diagonals of a parallelogram bisect each other. So we have got a figure ABCD और इसका diagonals AC और BD है which intersect each other at O, and we have to prove OA is equal to OC and OB is equal to OD. Now in triangle AOB and triangle COD, since both of them are part of parallelogram, so the condition will be like this. Angle BAO will be equal to angle BAO OCD, alternate interior angles. Now the next one, this one ABO angle ABO, वैसे भी हो सकता है, ABO भी ले सकते हो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल में, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं. एंगल AOB is equal to angle COD, vertically opposite angle. Now BAB is equal to CD, opposite sides of a parallelogram. Therefore triangle AOB congruent triangle COD by किस प्रोसेस से हो जाएगा वो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, which means OA is equal to OC and OB is equal to OD by corresponding part of congruent triangle CPCT. Hence proved that diagonals of a parallelogram bisect each other. Any confusion, any of you? नो सर। Clear है? यस सर। Shikha, any doubt? No, sir. Each other at right angle, then prove it's a rhombus, right angle. So what is given there? OA is equal to OC, OB is equal to OD since it is a parallelogram and AC perpendicular to BD. ये condition दिया गया है. अब आपको क्या प्रूफ करना है? ABCD is a rhombus. Now take in triangle AOD and triangle COD. We will take congruent triangles. Sorry, congruent adjacent triangles. AOD and COD. AOD and COD. In this one, OA is equal to OC. Given OA is equal to OC. Now, this one, this bisect at 90 degrees, so this will also be 90 degree. Angle AOD is equal to angle COD 90 degree. Okay. Now OD is equal to OD common. Any confusion, any of you? Yes, are you there? Yes, sir. Okay. अब देखो now triangle AOD will be congruent triangle COD by ये साइड ये एंगल ये साइड देन ये एंगल ये साइड बाय साइड एंगल साइड
अब ये कॉन्ग्रुएंट जब हो गया देन मेरा AD will be equal to CD by corresponding part of congruent triangle CPCT. And as we know, this is a parallelogram, so AD will also be equal to BC as well, and CD will also be equal to AB. Opposite sides will be equal as it is a parallelogram. Then AD CD के बराबर है, AD BC के बराबर है, CD AB के बराबर. अल्टीमेटली तो चारों साइड बराबर हो गया ना, AD BC के भी बराबर हो गया अपोजिट साइड, और CD आपको AB के भी बराबर हो गया. At this means AB is equal to BC, BC is equal to CD is equal to DA. All sides are equal. ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया, ABCD is a rhombus. पैरेललोग्राम के जब सारे साइड्स इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं. इज इट क्लियर? We should mention here opposite sides of a parallelogram. It will make things clear. Opposite sides of a parallelogram. Any confusion, any of you? No, sir. Shikha, things are clear? Yes, sir. Okay, thank you.